Hi everyone. So we are going to see three important questions for today, and it's a very important questions. आप ध्यान से देखिए. Now very first question talks about the UN World Data Forum. ठीक है? Now this first of all इस forum के आगे इस UN is there, right? So anybody which has UN, it's become a very important question for your prelims examination. Okay, very important question because UN से related इतने questions exam में आ रहे हैं, so we have to diversify the way we are learning, right? आप books पढ़ रहे हो, magazines पढ़ रहे हो, पता नहीं क्या पढ़ रहे हो, but why you are not able to hit the right question in the paper in the examination hall? One of the major reason is your source. बहुत बुरा है आपका. It's a worst source you are referring to always. Okay, so इस पे थोड़ा सा ध्यान देना एंड टू करेक्ट इट. इसका सॉल्यूशन क्या है? न्यूज़पेपर बेस्ड सोर्स. ओके, न्यूज़पेपर बेस्ड सोर्स होना चाहिए आपका. सर्च टॉपिक्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर, नॉट फ्रॉम द मैगजीन्स, राइट? चलो, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट स्टेटमेंट. व्हाट इज द रोल ऑफ दिस फोरम? ओके, to enhance the quality and the use of data to accelerate the progress towards the sustainable development goals. Okay, now somehow this statement looks clearly right. There's no point of any mistake. Even this statement appears first time in your paper, there's no point you can just miss, because aap choose any topic from any corner, right? It will be somehow related to the sustainable development goals. हमारे जो 17 गोल्स है, राइट? सो एवरी टॉपिक इज समहाउ, क्लाइमेट ले लो, कोल ले लो, लाइक आप हाउस होल्ड ले लो, गरीबी ले लो, सैनिटेशन ले लो, पानी ले लो, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द एसडीजीज, राइट? तो डेटा का भी एसडीजी से संबंध है, राइट? इट्स रिलेटेड. नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. Second statement, if you see, it promotes the development of the national and the global data ecosystem, encouraging countries to improve data infrastructure and adopt new technology. Again, there is no major problem in the statement. Now, it's like, why the statements here today looking like very normal? Because exactly I want to teach you from the solution, not from the question. Okay. Third statement, if you see here, the first UN Global Data Forum was held in 2024. Now, आप solution देखो और इसमें एक ही statement है where I can make you wrong is the third statement, and I have done that. Okay. तो कोई मेजर इट्स नॉट काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स. थर्ड स्टेटमेंट गेस वर्क काम करेगा इधर, ठीक है? नाउ इफ यू सी हियर, फोर स्टेटमेंट्स आर देयर, ए 1 and 2, थर्ड इज करेक्ट, दिस इज नॉट द फर्स्ट. पर हम सॉल्यूशन देखते हैं. ओके, नाउ द यूएन डेटा फोरम विल टेक प्लेस इन द कोलंबिया. इट्स अ मेडलिन, कोलंबिया. And this event is, okay, it's all about the event and all. Now, if you see here, the first statement, to accelerate the progress. Okay. Second statement, it's a biennial forum, serves as a global platform for discussing. Now, this is what you understand. This is not about the third statement, जो हमारा first था, that is incorrect. You see here, this is the fourth forum going on. Okay. अब ये जो चीज है ना, you remember that the Cape Town Global Action Plan related to data, Dubai Declaration related to data, and the Bond Data Compact for the Decade of Action Sustainable Development Goals 21 related to data, and then Hangzhou Declaration is also related to the data. ठीक है? तो ये चार फोरम, it's like 3 forums held, and in 3 forums these important declaration are there. ओके, तो आप इनका नाम याद रखना, बट दैट्स इंपॉर्टेंट. नाउ फोर्थ फोरम इज द प्रोसेस, एंड आई विल सी व्हाट डिक्लेरेशन कम आउट. करंट अफेयर्स में कवर हो जाएगा, टेस्ट सीरीज में कवर हो जाएगा, तो रहेगा कुछ नहीं आपका, कवर सब कुछ होगा. ओके, तो दिस इज व्हाट. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1 and 2. क्लियर? तो ऑल 4 डेटाज डिक्लेरेशन आप याद रखोगे 100%. चलो, नाउ इवन यू कैन यूज दीज थिंग्स इन द मेंस एग्जामिनेशन. Okay, how the international organization playing role in the data collaboration and everything, sharing and privacy and everything. So you can just make it like it's all the declaration, name of the declaration and all you can write. So uses तो है आपका, आप किस तरह use करते हो, that's important. Now if you see the second statement, it talks about the nitric oxide. Now it's all taken, all 3 statements here, ये random statements नहीं है. All 3 statements has been taken from the global
नाइट्रस ऑक्साइड असेसमेंट रिपोर्ट 2024, ओके, रिसेंटली पब्लिश्ड। तो ये तीनों स्टेटमेंट मैंने वहीं से लिया है, ओके। नाउ इफ यू सी हियर, if you see the explanation here, it talks about nitrous oxide considered to be the most significant ozone layer depleting substance emitted today. Okay, the most significant ozone layer depleting substance. So basically they are asking nitrous oxide is the ozone layer depleting substance. Okay, if we consider the anthropogenic sources, 80% of this nitrous oxide emissions comes from the fossil fuel, okay, 80% जो हमारा है it comes from the fossil. Is nitrous oxide is not a part of the, ये जो साइकिल होता है उसमें नाइट्रस ऑक्साइड का कोई भी लेना देना नहीं है, राइट। सो दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट्स. नाउ इफ यू पॉज एंड मार्क द आंसर इज सी and it talks about only one. First statement is incorrect, sorry, correct, rest two are incorrect, okay, only first is correct. Now अब देखो सारे डेटा जो है it will be taken from the report. I will not paste anything from my side, ठीक है. Now अब देखो अगर एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस की बात करोगे, एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस की बात करेंगे, it's like 75% originating from the agriculture and 20% coming from the emissions of the fossil fuel. सो जो नाइट्रस ऑक्साइड का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम द एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज 75 to 80% फ्रॉम द एग्रीकल्चर. गॉट इट. तो दिस इज व्हाट इनकरेक्ट, राइट. अब आप देखो यहां पे इट्स अ इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट ओजोन लेयर डिप्लीटिंग, द फर्स्ट स्टेटमेंट ये करेक्ट हो गया. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ इफ यू सी द ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, चलिए आप देख लो थोड़ा डिटेल में, मैंने इधर इमेज डाल दिया है. सो एग्रीकल्चर से देख लीजिए आप कितने ज्यादा है, एंड देन वी हैव ओनली फॉसिल फ्यूल बहुत कम, ओके, फ्रॉम बायोमास, एंड देन वी हैव द नाइट्रोजन. सो दीज आर ऑल द एग्रीकल्चर रिलेटेड ओनली, ओके. दिस इज व्हाट. तो आपका 80% एग्रीकल्चर से. ना नाइट्रोजन ऑक्साइड इज अ पार्ट ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल. आप देखो यहाँ पे इन द नाइट्रोजन साइकिल nitrous oxide is produced primarily through the microbial process of the nitrification and denitrification. So I have given you the equation also, I have given you the explanation also. आप थोड़ा सा पॉज करके if you want you can read. And third statement is incorrect because it is the part of the nitrogen cycle. Nitrous oxide is a part of nitrogen cycle. दिमाग खोल के आप कोशिश करोगे ना, लाइक आप हिम्मत बना के रखो, क्विट करने का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए इस एग्जाम में, ओके. थर्ड स्टेटमेंट देखो बहुत इजी है, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. इट्स हु रिलीजेस द रिपोर्ट एंड ऑल. तो आपका जो ये रिपोर्ट है इट्स अ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 24 इज रिली पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया हैज सिक्योर्ड अ स्पॉट इन द ग्लोबल टॉप 10. In these indicators, India has, in the top 10, India has maintained its list. लिस्ट में टॉप 10 में इंडिया ने अपना नंबर पोजीशन किया. अब आप देखो यहाँ पे कि आंसर क्या है इसका. आंसर है बी. टॉक बी ओनली. सेकंड स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट. यस, इंडिया हैज मेंटेन इट्स पोजीशन बट इट इज नॉट पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओके. इफ यू सी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश दिस इंडिकेटर्स. क्लियर. तो रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं, रिपोर्ट्स आते हैं, ठीक है. लाइक सबसे ऑफ ट्रैक रिपोर्ट जो मैंने देखा है 2018 के एग्जाम में, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वाज पब्लिश्ड बाय, एंड इसका आंसर शायद एमनेस्टी इंटरनेशनल था. तो समथिंग विच इज नॉट यू हियर वेरी मेन स्ट्रीम क्वेश्चंस टाइप, वो कभी कभी ऑफ ट्रैक क्वेश्चन पूछते हैं. तो जहां कहीं भी मोस्ट सीखो आप कैसे रिपोर्ट करोगे, रिपोर्ट का लर्न करोगे. एक तो जो ग्लोबली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के रिपोर्ट आते हैं, फॉर एग्जांपल WHO एंड वॉट एवर द रिपोर्ट्स UN रिलीज्ड और UNEP, UNFCCC. बट आप देखो जब PIB का न्यूज होता है ना, ओके, आपको मैं चलो बता देता हूँ. इफ यू डोंट फॉलो द गोल्ड टाइड में तो मैं वही कवर करता हूँ. बट इफ यू सी PIB न्यूज, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यहां पे कुछ रिपोर्ट्स का जिक्र करती है गवर्नमेंट. इन दीज रिपोर्ट्स इंडिया हैज परफॉर्म वेरी वेल, राइट. आप देखो जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है ना, तो इंडिया बहुत गुस्से में आ रहा है बिकॉज दैट इंडेक्स पब्लिश्ड बाय समथिंग एंटी इंडिया और
एंटी करंट गवर्नमेंट, तो हमेशा आप देखो कि इंडिया को बहुत लास्ट में रैंक देती है. सो दे रियली गेट एंग्री गवर्नमेंट, और उसको आप देखो वो बिल्कुल वो करती है. सो सच क्वेश्चन नेवर विल अपीयर इन द पेपर. इसलिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स मैंने कम करना ही बंद कर दिया है कवर, राइट. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, कभी कभी इंडिया इज लाइक अप्रिशिएट द रिपोर्ट्स. कोई एक रिपोर्ट आई है and India appreciate that report. See, in this report India has performed really well. So no matter which organization has released that, आपको वो करना है, आपको वो करना है. So this is what about the reports. तो इसका आंसर आप देख लो यहाँ पे, yes India has performed well. And तो चलो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट इट्स लाइक सीरीज ऑफ 3 important क्वेश्चन. रेस्ट यू कैन गो एंड सॉल्व इन आवर प्रोग्राम फॉर 25 prelims. 100% very important for all the students struggling with the prelims, and rest other questions on the website too. This is for the today. We'll see next important questions tomorrow.